Hello everyone, welcome to our webinar on emerging alternate opportunities in fixed income space. I am Sartaj and I will be moderating this session. Shortly we will hear from Mrs. Devina Khanna, Head of India Business, a new asset management company, and Mr. Amol, National Sales Head of Funds India Partner. Let's begin. Once again, a warm welcome to you all. Amol, the stage is now yours. Over to you. Joining us for this product presentation. Today's product is a little bit different in terms of whatever you must have sold because I am sure all of you are aware about AIFs, but at the same time, this today's product is a AIF. Although being a AIF, it works in a different space, which is what we can call as credit space or credit performing credit opportunity space. We have Devina Khanna with us today to present this product. She is the head of business at New Asset Management. She will take us through the product, and please feel free to ask all the questions which you think are important to you. So, with that, I will hand over the stage to Devina. Devina, please, you can take it ahead. Thanks. Thanks, Anmol. Thanks, Sartaj. And thank you, everybody, for removing time this afternoon to be here, hear out this opportunity that we have to present to you. Um, Before I go into the product itself, I wanted to explain the opportunity that there is in the alternative space. Now, this is a space that has been increasing, the AIF space that we all know about, has been increasing leaps and bounds in the last few years, as we can see in the SEBI data and the kind of AUM rise that has been happening. This is a trend that has been picking up somewhat like the mutual fund industry was about 10 years ago. So, you started seeing that big shift of money into the mutual fund space. While obviously this is a debt category, but it is a very vibrant alternative to traditional debt category. Where what do clients get? Clients get much higher returns compared to any traditional fixed income asset without any incremental risk that they're taking. Plus, debt AIFs try to inbuild one more aspect, which is regular cash flows going back to clients. So that at least clients are also aware that their money that they're giving is being put to use and it is generating income for them. So for them to also plan their cash flows, it becomes easier. जिन्होंने भी इसे अपनाया है, they've seen a really big growth in their overall assets as well. And there are large asset managers that have been doing only alternative debt and have succeeded in delivering these returns time and again to their clients. If you can just share that slide, Sartaj. Yeah. So just to quickly let you know, how do the world's largest investors invest currently, right? So this is CPPIB. It is one of the largest pension funds in Canada. Their allocation or asset allocation is 60% in the alternative space. This is inclusive of equity and debt, but they are more debt oriented because obviously this is a pension fund. Pension funds typically like to preserve capital. They don't take additional risk on their capital, right? They are more conservative in nature. 10-year net returns is 10.9%. This is dollar returns that we're talking about. Okay. Aside from that, this is some of the other big funds. So CDPQ, Ontario Teachers, which is OTPP. This is also one of Canada's pension funds. Allianz, GIC. So globally, if you see the kind of assets that they're managing, they're billions and billions of dollars worth of assets. And look at the kind of allocations that they are making. So ahead is obviously CDPQ Ontario. They have 60 to 65% along with CDPQ that we saw. Allocation to the alternative debt space. And others are coming very close. If you see return-wise, in the private credit space, private credit means what? Lending, ब्याज का काम, we lend, we earn returns. Private credit is the gap which is left in the banking space after the global financial crisis when the banks started to become a little more tight-fisted. When they said that, no, there are certain things for which we're not going to lend. So who's going to fill that gap? It is the private credit AIFs, private credit funds that have stepped in to fill that gap. And if you see the kind of returns globally, I'm talking totally global returns.
But it holds true for India as well. India is obviously charting a different journey altogether in equities. But on the debt side, alternative debt investments are proving to be stellar allocation strategies. 13% dollar returns is what private credit strategies have delivered. The top 25 funds, percentile of funds have delivered 13% dollar returns. Bottom 25% have matched S&P's CAGR return. So you can see the consistency of performance. And this is from 2010 to 2021. So over a decade of IRRs that these kind of funds have been generating. So it clearly proves that there is a lot of opportunity within the alternative space. Now, one is credit lending, the other is infrastructure and real assets, which means you actually own the assets. This also, as a strategy, has been providing steady state, regular income to clients with consistency in growth, capital gains also, because assets are asset ownership. So when you sell these assets, you make capital gains. So this is a dual strategy, a way to earn regular income and a way to also make capital gains. There also average returns have been about 13% dollar returns again. And that is where we want to make our presence felt. And that is where we want to educate all of you that the next big leap that is going to happen as clients get richer, as clients get more smarter, is their allocation towards alternative assets, right? Today, equity markets is a platform where you, asset class where you can really create a lot of wealth. But what happens when you want to preserve that wealth? When you want to stably grow that wealth without any fluctuations, without any volatility? That is the time that these AIFs will come into play. So, two big structural asset classes, credit and real assets monetization. Now, globally, if you see, like I said, post financial crisis, a big chunk of lending was taken over by private lenders, specifically to special situations. Now, India is probably where US was in 2005. So what we are talking about is a growth of almost 15% per year in private lending, private credit. So today, while the IPO market is 1,50,000, 1,70,000 crores, this is where private credit market will be by 2025, 2026, right? So it is a huge, huge opportunity for people like yourselves as well, and for clients also to earn very good risk-adjusted returns. This is what we are doing at Neo. So just to give you a rough idea, the alternative yield curve, as we call it. So there are various options, right? Clients, whoever has an appetite for alternative debt, who wants regular income, who wants to sleep peacefully at night without wondering कि कल market ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा. That is the clientele that we are looking at, where we want people to have the comfort of their sleep at night, where we are saying कि भाई आपको 1 साल का पैसा डालना है, आपको 3 साल का पैसा डालना है, आपको 5 साल का पैसा डालना है, या आपको 7 साल का पैसा डालना है, across right from 12% up till 22%. आपको जो भी रिटर्न है, जहां पे भी आपका रिस्क बैठता है, उस हिसाब से टाइम वाइज and return wise, you can pick and choose in this debt alternative space what you want to do, right? There are even open-ended strategies जहां पे आप 3 महीने बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, right? So you have the optionality कि भाई मुझे लंबा पैसा नहीं डालना, I don't want to lock in my money for 5 years, 7 years, so I want to keep it in a place where I have the liquidity option as well. So that is also available. So just the first idea that I want to talk about, and this is one of the major, this I'll talk about in detail, but this is a performing credit fund. Now, today's day and age, we see a lot of companies in requirement for credit. Now, they need money for acquisition. They need money for PE buyouts. Aajkal private equity is very hot, right? So, हर जगह पे private equity आ जाती है. And जब private equity investors को exit देना पड़ता है, तो most of these promoters have to go in for listing, or they have to arrange for funds internally, because banks तो ये fund नहीं करेंगे. तो कहाँ से आएंगे ये पैसे अगर आपको अपने internal accrual से पैसे नहीं निकालने, और your company is doing well, your company is doing good, you can afford a little extra debt on your books,
यू डोंट वांट टू गिव अवे इक्विटी, आपको इक्विटी और नहीं लूज करनी है अपनी, कि आपको दूसरे प्रीवियस इक्विटी इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए और इक्विटी छोड़नी पड़े, राइट? तो यू डोंट वांट टू डाइल्यूट मोर, so that's where private credit comes in, and because you are solving that need for them, आपको थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है, because एक तो you are meeting their time requirements, because these are time bound requirements, plus structuring is flexible. बैंकिंग सिस्टम में ऑल द स्ट्रक्चरिंग इज एज पर अ चेकलिस्ट, आपने ये क्राइटेरिया मीट किया तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. यहाँ तक कि if you're a specific industry, they have industry wide blacklisting also. So अगर if you're doing well but the industry is not something that the bank is very pro lending to, you will still not be able to get the money you want, right? So that is the benefit of private lending. Strong counterparty. So यहाँ पे we are not doing any kind of activity जहाँ पे we feel के सामने वाला जो बैठा है is in a very dire state, कि उसको पैसे की जरूरत है, उसके बिना वो जी नहीं पाएगा. No, these are all good performing companies. Specific requirements आ जाते हैं उनके, और उनको दे आर परफॉर्मिंग, एबिडा पॉजिटिव कंपनीज है, उनके डेट टू एबिडा टिपिकली 3:1 एंड बिलो के होते हैं. बट इनको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, टाइम बाउंड रिक्वायरमेंट आ जाती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग चाहिए होता है, तो दैट इज व्हाई दे कम टू प्राइवेट लेंडर्स. तो यहाँ पे हम 15 से 16 का काम करते हैं. सो द ग्रॉस IRR हियर इज अबाउट 15 to 16 months. अ शॉर्टर ड्यूरेशन फंड कैटेगरी 2 AIF है, शॉर्टर ड्यूरेशन 3.5 to 4 years का फंड है. This is the only fund currently in the market जिसको क्रिसिल ने रेट किया है. तो we have got a CRISIL rating of AA-, right? And this rating has come to us on the basis of certain restrictions जो क्रिसिल ने हम पे लगाए हैं कि आप ये आपका स्ट्रक्चरिंग होगा, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. तो very boxed strategy, and on top of that we have given you additional comfort to the client by saying कि हम इस फंड में 700 crores का हमारा टारगेट AUM है, तो हमारे टारगेट AUM का 6% मनी कॉर्पस नियो डालेगा, and that will be used as a protection against possible capital loss for the client up till the extent of 6%. So मतलब we are going one step further, saying 40 crores of 700 crores is Neo's money. क्लाइंट का 1 रुपया टूटने से पहले नियो का पूरा 40 crore जाएगा. You know, that is the confidence that we have in this strategy. Infra income, again, asset buyout, operating assets को खरीदते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं 4 years के लिए, 5 years के लिए, एंड देन उनको पैकेज करके सेल कर देते हैं. किसको सेल करते हैं? आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना, द बिग कैनेडियन पेंशन फंड्स, दे आर एक्टिव इन नॉट जस्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग, दे आर एक्टिव इन इंडिया इन्वेस्टिंग ऑल्सो. एंड इंडिया में काफी ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहता है. So they are always in the lookout for buying these road assets, buying solar assets, which gets added onto their annuity portfolios. उनको क्या करना है? उनको अपना पैसा लंबे समय तक लगाना है. और इंफ्रा से ज्यादा लंबा तो कुछ है नहीं in terms of their overall period, like concession period for roads 15-15 साल के होते हैं. PPA contracts in solar 25-25 साल के होते हैं, right? So you are actually locking in stable yields for a really long term. With regular cash flows, इसमें भी every 6 months कूपन आता है, right? So around 4.5% का every 6 months पे कूपन आता है. So that's more than happy. They are more than happy with that kind of income. So here we buy operating road assets, operating solar assets. जहाँ पे mainly counterparties कौन होती है? Roads में होती है NHAI, National Highways Authority of India, right? They are central government counterparty. अभी आप अगर NHAI का बॉन्ड खरीदते हो तो डू यू एक्सपेक्ट NHAI टू डिफॉल्ट? 8% मिलता है आपको, टैक्स फ्री 5.5% मिलेगा. यू विल ब्लाइंडली पुट इन NHAI बॉन्ड बिकॉज दिस इज सॉवरेन, सेंट्रल गवर्नमेंट है. अगर NHAI ने डिफॉल्ट किया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफॉल्ट किया, राइट? तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बाइंग दोस एसेट्स व्हिच आर बैक्ड बाय NHAI, काउंटरपार्टी इज NHAI. सेम थिंग वी आर डूइंग, बट वहां पे आप NHAI को लेंड करते हो, यहाँ पे आप उसके एसेट्स खरीदते हो जहाँ पे वही आपको पैसे देते हैं NHAI. So instead of earning 8%, you are able to earn 20%, close to 20%, with the same kind of risk. In solar, कौन खरीदता है आपसे पावर? NTPC के साथ आपका PPA है, SECI के साथ आपका PPA है, Solar Energy Corporation of India. These are central government bodies, right? Now they are the guys who are going to be off takers of your power. और ये power industrial use, commercial use के लिए नहीं होता, ये power सीधा grid में जाता है. तो every month there's an invoice raised and NTPC and SECI have to
honor that invoice, right? Otherwise it will be considered as a default. तो ये काम हम करते हैं, खरीदते हैं assets को, उनको चलाते हैं. We have a very strong operating team that has been in road and solar operations for the last 2 decades. So we operate them also, and then in the 5th and the 6th year हम इसको पैकेज करके 2 पोर्टफोलियोज बेच देते हैं, एक रोड्स पोर्टफोलियो और एक सोलर पोर्टफोलियो. वो कैनेडियन पेंशन फंड्स को बेच देते हैं या तो लिस्टेड इनविट्स को बेच देते हैं. इनविट्स ऑलवेज नीड मोर एंड मोर एसेट्स टू ग्रो, क्योंकि अनलाइक रीट्स, इनविट्स आर, they have a limited lifespan, so they are not perpetual in nature. तो उनको they need to keep on adding assets, and assets आएंगे कहाँ से? हम जैसे लोगों से. हमारे फंड्स के assets उनको बेच देंगे, right? तो इसमें करीबन 18 से 20% का काम होता है. Short term, this I won't get into right now because I want to stick to the Neo Income Plus strategy. But just to give you a quick idea, this is treasury solution for larger corporates जिनको अपना पैसा 3-6 महीने के लिए पार्क करना होता है और उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता. तो दिस फंड यहाँ पे 60% ऑफ द कॉर्पस गोज इनटू AAA फिक्स्ड इनकम एसेट्स. 20% से हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, जैसे कि मर्जर आब हो गया, IPO हो गया, बायबैक हो गया, ओपन ऑफर हो गया. वेरी बॉक्स स्ट्रेटजी, आर्बिट्राजेशन नेचर. इसमें कुछ लॉन्ग शॉट नहीं करते हम, कोई डायरेक्शनल कॉल नहीं लेते, राइट, ऑन द मार्केट. और बाकी का 20% पे हम हेज्ड ऑप्शन स्ट्रेटजी करते हैं. वो भी डेल्टा न्यूट्रल होता है, एक्टिव मैनेजमेंट होती है उसकी, ओवरनाइट पोजीशंस नहीं होती. तो यहाँ पे हम 1100 करोड़ मैनेज करते हैं और हमने पिछले 18 महीने से हमने 14% के आसपास का ग्रॉस रिटर्न डिलीवर किया है. ये कैटेगरी 3 AIF है, तो इसमें टैक्स कट के आपके क्लाइंट के हाथ में आता है. तो करीबन 7.5 से 7.25 तक का टैक्स फ्री रिटर्न आता है. इफ यू हैव टू कंपेयर इट टू एन आर्बिट्राज फंड, it's an alpha of about 1.5% to an arbitrage fund on liquid money, right? So that makes a huge difference. Yeah, so this is basically the idea, to give you a glimpse into what all is there in the alternative space में आप क्या क्या काम कर सकते हो. You know, the opportunity is immense. आप, you know, wherever your mind takes you, there is an opportunity. Okay, so quick snapshot again. Income Plus Fund is a performing credit fund. परफॉर्मिंग क्रेडिट फंड मींस हम अच्छे कंपनीज को पैसा देते हैं जो कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं. कैश बर्निंग कंपनीज को पैसा नहीं देते, रियल एस्टेट को पैसा नहीं देते, लॉस मेकिंग कंपनीज को पैसा नहीं देते. परफॉर्मिंग कंपनीज को पैसा देते हैं एट 15.5% के आसपास. यहाँ पे वी आर वन ऑफ द ओनली करंटली जो फंड्स एक्सेप्ट करनी है, वी आर द ओनली AA- रेटेड फंड. ठीक है, यहाँ पे एज एन AIF हमने परफॉर्मेंस फी भी नहीं रखी है क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज वी रियली वांट पीपल टू एक्सपीरियंस दिस एसेट क्लास. कि भाई आप कैसे एनी ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम आप AA- का आज की तारीख में कुछ खरीदते हो तो 975-10 के आसपास आपको मिलेगा. उस पर आप टैक्स लगाओ, ठीक है, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा. यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मेक कि आपके हाथ में एटलीस्ट 9.5 पोस्ट टैक्स पोस्ट फीस सब आ जाए इन द सेम लाइक टू लाइक कंपैरिजन. इफ क्रिसिल ने हमें AA- रेट किया है तो क्रिसिल के क्राइटेरिया के हिसाब से रेट किया है उसने, राइट. तो नो फीस, आई मीन नो परफॉर्मेंस फीस, ओनली फ्लैट मैनेजमेंट फीस. मंथली कूपन इसमें 1% पर मंथ के हिसाब से हर 2 महीने में पे आउट होता है. सो दैट मीन्स कूपन वाइज 12% पर एनम का कूपन मिलता है. ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द फंड वो बैलेंस 3% will be adjusted and you get your total IRR of 15%. The end of the term of the fund. So every month 1% coupon is also a very very unique feature. Every 2 months में payout होता है 2% का. So there also clients will see the benefit of cash flow management. हमारा फंड छोटा साइज का है, 700 करोड़ का फंड है. So quick deployments. Typically क्या होता है, फंड्स 5,000-6,000 करोड़ रेज करने जाते हैं, 2 साल तक तो फंड रेज ही करते रहते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट में टाइम चला जाता है. तो क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरा पैसा तो मैंने कमिट कर दिया है, लेकिन आप लोगे कब, और व्हेन विल माय मनी वर्क फॉर मी. सो दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट अ शॉर्टर डिप्लॉयमेंट पीरियड. 1 साल के पीरियड में पूरा पैसा ले लेंगे एंड देन डे 1 से आपका रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 डील एग्जीक्यूटेड है, एक तीसरी डील अभी ये वीक एग्जीक्यूट होने वाली है, और सितंबर से पे आउट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे. ये फंड हमने 2 महीने पहले लॉन्च की थी. अब 700 करोड़ में से 250 करोड़ हमने रेज कर दिए हैं इस फंड में ऑलरेडी, और उसका फर्स्ट क्लोज भी हो गया है.
तो करीबन now if you go to see 3.8 years is the residual life of this fund. ओके तो ये है क्रिसिल ने रेट किया है. क्रिसिल के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहले तो ओनली सिक्योर्ड एनसीडीज, मिनिमम 12 इन्वेस्टमेंट्स करेंगे हम इस फंड से विद अ मैक्सिमम एक्सपोजर कैप ऑफ 10% ऑन ईच इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे 60 करोड़ के आसपास का एक मिनिमम टिकट साइज होगा. 12 डील्स हमें करनी ही करनी है, विच मीन्स दैट हैज टू बी एम्पल डाइवर्सिफिकेशन. नन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स कैन गो बियॉन्ड द टेन्योर ऑफ द फंड. मतलब 4 साल का फंड है, उसके बियॉन्ड जा नहीं सकता. ठीक है, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरिंग ऐसी होनी है कि टिपिकली क्या होता है, आपने लेंड तो कर लिया, बट अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपका प्रिंसिपल बलून हो रहा है और वो आप एंड में लोगे तो वहां पे रिस्क बहुत स्क्यूड हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है. सो वी हैव गॉट अ मैंडेट कि हमारे जो डील्स होंगे उसमें से 70% ऑफ आवर डील्स हैव टू बी अमोर्टाइजिंग डील्स. मतलब कि प्रिंसिपल भी रेगुलरली वापस आना होगा, बुलेट प्रिंसिपल नहीं होगा. बुलेट प्रिंसिपल सिर्फ कैप ऑफ 30% ऑफ योर ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑन बुलेटेड प्रिंसिपल, राइट. इससे रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है. एंड इसकी प्रॉपर मैंडेट है, मतलब कि रेटिंग रैशनल दी है क्रिसिल ने कि किस किस लेवल पे हमें रेट किया है उन्होंने. और एंड आई जस्ट वांट टू शो यू दिस स्लाइड टू गिव यू एन आइडिया वेयर वी सिट in terms of the level of risk. So when you're looking at IIFL Finance, so when you're looking like at a Muthoot FinCorp, which is a AA minus rated fund, when you're looking at 361, which is AA minus, we in this category we have got risk profiling in the similar manner because हमारी जो 6% की sponsor commitment है, that acts as a big safety net. सी आप अल्टीमेटली क्या देखते हो, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट देखते हो, राइट, कि क्या है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, उसके हिसाब से आपको रेटिंग मिलती है, कीपिंग ऑब्वियसली द फाइनेंशियल मैट्रिक्स असाइड. और क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. तो हमने वो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट यहाँ से जितना भी हो सके मिटिगेट करने की कोशिश की. वैसे ये पहले तो ये मेरा 6% जाएगा, मेरा 40 crore एज अ बफर, एज अ सेफ्टी नेट आई हैव पुट इट फॉर द क्लाइंट. ये देखिए यहाँ पे व्हाट हैव आई डन. इफ यू कैन सी इनकम प्लस का risk of default is the same as a AA का risk of default. Yet the delta of returns 9% for a AA, 14 to 15% in income plus. So that's a clear win for the investor. Again, strong counterparty. हमारा biggest point is कि सामने वाला जो है has to be a very strong counterparty. उसका equity base बहुत बड़ा होना चाहिए. See, ultimately as a debt investor, you always come before equity. So if there is a large equity base, you know कि वो, and हमारे trades जो होते हैं वो 3 साल के आसपास के होते हैं, तो they're not very long duration trades either. So यहाँ पे you have to just figure out कि ये company will it sustain itself for the period of time that I have lent it money. And all the companies that we are looking at, these are all pedigree companies. They have been in existence for more than 10-12 years. You have to also see the ability of the counterparty to raise capital. Previously, counterparty, has the market been able to fund this counterparty? Has he been able to raise money in the past? Because that will give you confidence कि भाई ये इसको market ने पैसे दिए हैं पहले, and he's capable enough to raise money again. तो अगर कल को business में कुछ challenges आ गए तो ये market से refinance कर सकता है, right? And these are all time tested scale companies. Debt to equity आप देखने जाओ तो almost 0.5% ही है, all secured investments. And again, this is where we are at. Acquisition finance करते हैं, growth funding करते हैं, LAS funding करते हैं, PE buyouts करते हैं. So these are all very unique ideas that and unique strategies that come out, right? हम क्या नहीं करते, early stage नहीं करते, like startups नहीं करते because उनमें बहुत cash burn होता है, right? तो there we are not very active. Real estate, cyclical industries, we don't want to look at. Distressed हम नहीं करते, turnaround investments नहीं करते. These are all performing companies जो regular cash flow generate करती है और वो cash flow से हमें pay out कर जाएंगे, right? So shorter duration trades, 2 से 3 drawdown maximum. अभी हम अगर कोई fund में अभी आता है तो we are taking about 30%. Now 30% more in a couple of months and then another 40% towards the close. So that's where we are at right now. 30, 40, 3 drawdowns में पूरा पैसा ले लेंगे. This is AIF category 2. So minimum investment is 1 crore here. हमारी 2 deals
लाइक आई सेड एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और एक वेरी एडवांस्ड है, तो ये वीक में एग्जीक्यूट और इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगी, तो 3 डील्स हो जाएंगी कंप्लीट। मैं आपको जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ द काइंड ऑफ डील्स दैट वी डू। सो द फर्स्ट डील हमने जो की है, इट इज टू ब्लूस्टोन। कुछ लोगों ने ब्लूस्टोन का नाम सुना होगा। दे आर टू फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं एंड बेसिकली उनको पैसे चाहिए थे। हमने ये डील की थी करीबन 2-3 महीने, हमने ऑलरेडी डील कर दी थी और फंड बाद में लॉन्च किया था हमने। तो हमने ये 3 महीने पहले डील करी थी व्हेन दे नीडेड मनी टू रीफिल देयर स्टॉक इन देयर 200 स्टोर्स। तो उनके 200 स्टोर्स हैं, 1200 करोड़ का रेवेन्यू बनाती है। हर एक स्टोर का ग्रोथ 40% है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। वी आर लुकिंग एट क्लोज टू 100 करोड़ EBITDA नंबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। डूइंग वेरी वेल, हैज अ वेरी लार्ज इक्विटी बेस लाइक आई सेड। तो इसमें किसने इन्वेस्ट किया है? प्राइवेट इक्विटी। नितिन कामत ने इन्वेस्ट किया है, इन्फो एज ने इन्वेस्ट किया है, कलारी ने इन्वेस्ट किया है, और अभी मोर रिसेंटली 900 करोड़ उनको आए हैं फ्रॉम अर्स्टवाइल सेकोया। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने इसमें इक्विटी डाली है और मैंने कितना दिया है इसे? 60 करोड़ दिया है फंड से। तो अब इतने लोगों ने जो पैसा डाला है और इस ये डील हमने की है 2 साल के लिए। तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये कंपनी जो 12 साल पुरानी कंपनी है, जिसकी लॉन्जिटिविटी 12 साल से चली आ रही है, सीन साइकिल्स अप एंड डाउन, अभी आईपीओ के लिए जाने वाली है, डीआरएचपी फाइलिंग में है, इसको 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए आईपीओ में, कि क्या करेगा मेरे 60 करोड़ का? विल ही डिफॉल्ट ऑन माय 60 करोड़ after getting so much of equity infusion? So that is the call that you have to take, and that is what you have to assess. तो ये डील हमने करी है 15% पे 2 साल के लिए। 60 crores is what we've given the guy. We've done another deal in the financial space. Very prominent name. It's a Kirloskar Group company. उनका भी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गया था। बेसिकली यहाँ पे द कंपनी विच इज अ डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ किर्लोस्कर, उनके 2 आर्म्स है, एक एनबीएफसी आर्म है और एक एसेट मैनेजमेंट आर्म है। तो एसेट मैनेजमेंट आर्म का क्रेडिट फंड है। एनबीएफसी ने उस क्रेडिट फंड में कमिटमेंट किया था कि भाई एनबीएफसी से इतना पैसा जाएगा फंड में, पर आरबीआई के रेगुलेशंस चेंज हो गए। सो बिकॉज ऑफ दैट now no longer the NBFC can fulfill that commitment. So now the AMC has to replace that commitment. But how will the AMC replace it? Because no bank is going to give money for that much time. So that is where our money has come into use. We've given money at about 14%, and we've got 1x cover of the collateral of the units itself, plus a letter of comfort from the holding company of Kirloskar. Now today the group entity is also AA- rated. Equity infusion in the financial division of 1,000 crores. Very well-known company. Now here, today, if any default happens in any group company, any company, the group entity also gets affected. So obviously, we also have that comfort with the kind of backing that is coming in from Kirloskar Group. तो यहाँ पे भी हमने 50 करोड़ ही दिए. We've not given it more. Total net worth of this group is of the company is about 1150 crores. ये 2 डील हो चुकी हैं. इनके पेमेंट्स अभी सितंबर से क्लाइंट्स को जाना स्टार्ट हो जाएंगे कूपन वाइज। एंड देन देयर इज अनदर, वी कांट नेम इट बट इट्स अ लिस्टेड कंपनी, एंड दिस कंपनी आल्सो रिक्वायर्स मनी फॉर ऑनलाइनिंग पर्पसेस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट है, 60 करोड़ दिए हमने। नेट एनपीएस सब 2%, कॉर्पोरेट गारंटी पेरेंट की आ रही है जो 7,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है। फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स पे चार्ज भी दिया है हमने। सो वी आर एक्चुअली quite comfortable on this transaction also. 15% की डील है। Coming to our fund manager आशुतोष ओझा, काफी एक्सपीरियंस्ड है, आईआईटी कानपुर IIM लखनऊ से है। प्रीवियसली बिरला म्यूचुअल फंड में थे, उसके पहले ईडलवाइज में थे। सेम स्ट्रैटेजी करी है उन्होंने, विद 100% सक्सेसफुल एग्जिट रेशियो उनका है। ऑलमोस्ट $1 billion डिप्लॉय किए हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी क्रेडिट अंडरराइटिंग। 25 से ज्यादा डील्स किए हैं उन्होंने, काफी बड़े बड़े भी डील्स किए हैं। तो ये हमारे फंड मैनेजर है। एंड आर आईसी टीम, सम पीपल वुड हैव नोन नितिन, आप कभी मिले होंगे, कभी सम ऑफ यू वुड हैव मेट हिम व्हेन ही वाज अ पार्ट ऑफ ईडलवाइज। तो ये जो टीम है हमारी सीनियर मैनेजमेंट टीम है। नितिन, नियो, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, नियो इज
the baby of Nitin Jain. Nitin Jain was the ex-CEO and of Edelweiss Wealth and Asset Management before it became Nuvama. So he used to manage almost all businesses at one point except for insurance and NBFC. फिर जब Nuvama split हो गया तो Nitin started new. हमारे 2.5 साल का जर्नी हो गया अभी. And along with Nitin, there's Hemant Daga. He's the CEO of the asset management business, which we are a part of. I'm a part of. He used to head the entire mutual funds business of Edelweiss. So around 70,000-80,000 crores of assets he used to manage. And then there's Puneet, there's Varun, there's Ruben. Some of you would have heard of True North. True North का credit fund आपने सुना होगा. So Ruben joins us from True North. He was a very senior member of the investing team in True North. Some of you would have probably met him also. So very established, well-seasoned team who has seen multiple cycles of investing, right from days of ARC to performing credit to special sits credit, everything. So यहाँ पे you can say कि our main core capability is credit underwriting in every shape and form. And we are very confident about that. So that is the strategy in short. ये हमारी fees है. तो अगर कोई client को 1 crore डालना है 1 to 3 crores तो 1.75% की fees पड़ेगी. If someone wants to put slightly more, then उसके हिसाब से it will keep coming lower and lower. So depending on what the equity share class is. Again, zero performance fee, no performance fee. So it's just a flat management fee that comes in. Yes, so that is the whole idea of the fund. If So just a couple of quick questions. How do you identify the investment opportunities before actually, and what processes do you follow before actually deploying the money into the identified company? I mean, that is very important. पहले तो आप starting point क्या है आपकी? That is the most important thing. So पहले तो हमारी deals they come to us in 2 ways. एक तो होती है हमारी proprietary deals that come directly to us, and the other is deals which are showcased to us through intermediaries. Bankers दिखाते हैं कभी-कभी, CAs दिखाते हैं, कभी-कभी clients दिखा देते हैं कि ये requirement है, आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं. So when we get a short list of these transactions, there is a proper filtration and diligence process that happens to figure out कि ये deal is it worthy to even go to our investment committee. तो investment committee पे बैठते हैं ये जो all the 5 that I named, Nitin, Hemant, Varun, Ruben, Ashutosh himself. So after almost a month and a half of diligence on the background, on the financials, on cash flows कैसे company के erratic है कि steady state है, पैसे कैसे आएंगे, exit कैसे होगी हमारी, then it's presented into the investment committee. And investment committee, all 5 investment committee members have to agree okay, you can go and deploy it. Only then will be deployed. If there's even a single investment committee member that raises an objection or has some apprehension on the deal will not go through till his doubts are clarified. Okay, bhai, aapko kyun, what is the reason that you're not liking the deal? And if you're able to convince him, okay, maybe your thought process is like this and this is what we have thought. And if you're able to get him on board, then the deal will go through, else the deal will be dropped. If he's still not on board, the deal will be dropped. So it is a very stringent diligence and IC process that we follow. Mr. Rajesh Rao, I think so, he himself has given the answer to whatever he wanted to say. So he says that clients will have a liquidity risk during the investment period, and perhaps this product is not for retail investors. I think so, he is correct. This product is not a product for retail investors. This is a product where very seasoned, mature, and people with a proper product understanding should come into and invest the money. That is very important. So correct. This is not a product for retail investors, Mr. Rao. Yeah. The one more part. If I can Yeah, just yeah, add, what are we trying to do here? So we are today saying that everybody puts money in FDs, right? Obviously now the trend is changing a little because equity markets are doing so well. Household savings coming down, people are removing FDs and putting in equity markets. But obviously that phenomena is not long term, right? It's a short term phenomena. So यहाँ पे what are we trying to say? We are adding
compared to FDs, we are adding an alpha of a good 3.5 to 4%. To even if a minor portion of your FDs get transferred here into such products, your yield just gets bumped up. Correct. And it is, आप 7 साल का FD करा के बैठते हो. I mean, I'm talking about general people. When they make 7 year FDs, थोड़ी ना दिमाग में वो चलता है कि मुझे FD कब तुड़वानी है. वो 7 साल का पैसा लगा के भूल चुके हैं उसे. It is for 7 years. So it is for those kind of people who are seeking yield. उनको yield चाहिए और उनके पास वो टाइम फ्रेम का कंफर्ट है कि मुझे 3.5-4 साल तक मैं ये पैसा लगा सकता हूँ. Yeah, so perhaps what is needed is a proper identification of the customer, his liquidity requirements, his net worth, too many things. But that is the first right step to do, I think so, before taking the product to the customer. And then, of course, you have explained the entire process about, how do you go about before you actually invest the money into the company. I mean, so during the course of presentation, you also mentioned the skin in the game part where you invest your own money. I will ask you to just once again throw a short highlight on that part where I think so. It is a very what we can say comfort giving kind of a point, and which is very important as a asset management company and for the investors. So what we are trying to say is, यहाँ पे we are not giving you any yield guarantee. Means हम ये नहीं बोल रहे कि अगर आपका रिटर्न 15 से कम हुआ तो हम वो गैप फिल करें. What we are trying to say is कि in this 4-year fund, say you put 100 rupees, or by the time we are closing the fund, अगर P plus I does not add up to that 100 rupees, we will fill the gap. ताकि आपका एटलीस्ट कमिटमेंट जो आपने दिया था वो तो निकल आए. Capital. बट इट्स नॉट टू से कि आपका रिटर्न कम बना तो हम वो रिटर्न को फिल करेंगे. It's a good point to clarify, actually. Correct. Yeah. Okay, you also mentioned about the drawdowns. So first drawdown will be roughly about 30 at the time of investment right now. If somebody does a transaction now, then 30 after a couple of months. But I think so. Yes. You have not mentioned the third drawdown. After the second one, how So much period? we want to take the money, like I said, हमको like 10 months में पैसे we want to collect. So if we take 30 now, then next 4 months another 30, and then another 40 by the end of the 4th, 5th month. So there is one more question about the yield. Mr. Rahul is asking whether the yield we are showing is excluding fund management charges or including. It's gross. So Gross. 15% is gross. उस पे fund management fees लगेगी. And also, can you, I mean, although it is well known, but still, this is a category 2 AIF. So I think so the returns are taxable in the hands of the investor as per tax bracket, right? Correct. Yes. So यहाँ पे TDS will be cut, and then returns will be given to clients, and then they can pay tax as per their tax slab. One more small question, although, but it's a question. So while mentioning the kind of pedigree these companies have, you also mentioned some well-known groups and company names. So somebody is asking a question about if these are so well-known and well-established groups, why do they need 50-60 crores kind of money for a short duration from Neo Capital, Neo Asset? It's in the jewelry industry. Jewelry industry में, like I said, sometimes banks are conservative. उनको पैसे देने में एक तो टाइम भी बहुत लग जाता है, प्लस there are certain checklists which it has to follow. तो जैसे gems and jewelry industry में आ जाती है तो थोड़ा सा hesitation आ जाता है, right? Plus point is time, like I said, उनको पैसे चाहिए थे, जल्दी चाहिए थे, इन्वेंट्री बिल्ड करनी थी. See, today उनको अभी 900 करोड़ रेज हुए हैं उनके. For all you know, our money has helped them raise that equity. Right? तो उनको वो रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेंट्री बिल्ड करनी है उनके 200 स्टोर्स में, and they needed that money, which only private credit can give, because banks are very slow, they are inactive, they are not very open to the idea at times to coming to companies which probably don't have like a 4-year profitability history.
तो वहां पे प्राइवेट लेंडर्स कम इन, वहां पे वी हैव बीन एबल टू सी द ग्रोथ इन द कंपनी. एक कंपनी अगर 12 साल तक सस्टेन कर जाती है, साइकिल्स को सस्टेन कर जाती है, इतने सारे इक्विटी बैकर्स हैं, तो देन योर रिस्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स गेटिंग लोअर. एंड यू आर अ डेट इन्वेस्टर, मतलब कुछ होता है तो पहले आपको पेमेंट आएगी, उसके बाद इक्विटी प्लेयर्स को पेमेंट आएगी, राइट? Correct. आरका का क्या है? आरका का रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज आरबीआई ने रेगुलेशन चेंज कर दिया. एनबीएफसी वाज पुटिंग ओनली नो मनी. The NBFC arm was giving money to the commitment to the asset management company, but because of a regulation change, they cannot do that. And बैंक से आप ये पैसे तो नहीं मांग सकते, आप बोल नहीं सकते बैंक को जाके कि भाई मेरी फंड में कमिटमेंट शॉर्ट पड़ गया, आप पैसे दे. And I hope people have understood this product and will, as we were speaking earlier, they will properly identify a customer where this product can be very useful to that customer. And I personally have a view that in the market there are all kind of investors and all kind of product opportunities available. So the first step is always to identify the customer correctly. What is he, even within asset allocation part. So whatever portion of debt you think your customer should have as a partner, whatever you think, what Devina has been trying to say all this time is that even within that debt portion of the total asset allocation, this is a product which will try and help you help the customer earn a higher side or a kicker to the total debt returns of that portion of investment. I mean, so please look at this product. Just Yeah, just see, today everyone wants an equity and debt mix. Some people Right. have a much larger equity portion and smaller debt portion, and some like to have slightly more balanced. But even in that debt portion, now people are splitting debt into traditional and alternate. correct. Taki, you get that yield bump up. Yeah, so And without you're- actually changing your asset class, if you try to get this product to the proper kind of customer, his portfolio can give a higher return even without actually shifting the portion from debt to equity. That is why these products are very very important to understand and take it to the customers. I mean, One last point I want to make. See, today, we've raised in a special credit fund, we've raised 2,600 crores. In 2 months, we raised 250 crores in performing credit. So, clients, and we've seen that our products, people come and inquire. They want to know what's there in the market. So, अगर आप नहीं दिखा रहे हो ना, तो कोई और दिखा रहा है. correct, और correct. क्लाइंट को अगर पसंद आया ना, तो वो दूसरे बंदे के साथ जाके कर लेगा, और शायद आपको पता भी नहीं चले. तो द पॉइंट इज कि जनरली वी टेंड टू क्रिएट इंप्रेशंस ऑफ द क्लाइंट कि भाई मेरा क्लाइंट तो यही करेगा, ये तो करेगा ही नहीं. बट यू डोंट, as time changes, the mindset and the availability of these kind of opportunities, just making the client aware is something that is value addition that you are providing to the client. तो करे नहीं करे वो अलग बात है, बट क्या उनको पता है कि ऐसी चीजें हैं मार्केट में? दैट इज एजुकेशन जो आपको क्लाइंट को डेफिनेटली देना चाहिए. True, completely true, correct. I think so many a times partners come across after a couple of months when the customer has already done the transaction, and very interestingly the customer always says that I didn't knew that you had this kind of product available with you. एग्जैक्टली That happens, तो that happens. कस्टमर सोचता है आपके पास नहीं होगा शायद से, तो आपको पूछते भी नहीं है, Correct. क्योंकि प्रीवियसली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली शोकेस कि आपके पास भी वो अवेलेबिलिटी है. Huh. All right. Thanks, Devina. Thanks for explaining the product. I think so we have covered all the aspects of the product features, and hopefully everybody has understood this product and will take this product to the right kind of customers, which will again help their portfolio to get better returns, even within the debt segment. I mean, thank you, Yes. thank you, Thank you, thank you, thank you. thank you, partners. everybody. Thank you for attending the call. Yes, Thank you. thank you.